Welcome back to my channel. If you are new on my channel, then do not forget to like, share and subscribe. So let's start. In today's video. We are going to see some PYQs of research methodology. So let's start with the question. शुरू करते हैं हम. आज का फर्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च मेथडोलॉजी का. रिसर्च मेथडोलॉजी पे फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. Now statement A, B, C, D are given. Reliability ensures the validity. Validity ensures the reliability. Reliability and validity are independent of each other. And the D is reliability does not depend on objectivity. So here option number C is correct, that reliability and validity are independent of each other. Reliability and the validity never depend that on each other. They work differently as well as they are independent of each other in research methodology. Now question number 2, which of the following statement is correct. Objective of research are stated in the first chapter of the thesis. जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव है वो थेसिस के पहले चैप्टर में होते हैं. सेकेंड हमारा बोलता है रिसर्चर्स मस्ट possess analytical ability. C is that variability is the source of problem, or the all are correct. So here correct option is D. It is correct that objectives of a research are stated in first chapter of the any thesis. Then researcher must possess analytical ability and the variability is the source of problem, and these are all correct. Now the question number 3, the first step of research is. So definitely option number D is correct, that identifying a problem, it is the first step of any research. Now the question number 4, research can be conducted by a person who. So here option number B is correct. A research can be conducted by a person who has studied research methodology. तो रिसर्च वो पर्सन कर सकता है जिसने रिसर्च मेथडोलॉजी स्टडी किया हो. क्वेश्चन नंबर 5, रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज. रिसर्च की क्लासिफिकेशन क्या क्या है. So the all are correct because there is a basic research, applied research, action research, philosophical, historical, survey, experimental research, quantitative, qualitative. These are the classification or types of research. So the option number D is correct here. Now question number 6, to test null hypothesis a researcher uses. So null hypothesis को टेस्ट करने के लिए researchers किसका यूज़ करते हैं. So the ANOVA is a B correct option. Now the question number 7, bibliography given in a research report. So जो bibliography जो है research report में दी जाती है. So why? To shows vast knowledge of the researcher, to help those interested in further research, or has no relevance in research. So the here option number B is correct, that helps those interested in further research, and that is why bibliography is given there. Now the question number 8, a research problem is feasible only when. research problem तभी feasible होती है. So the here correct option is option number D. A research problem is feasible that it has utility and relevance, it is researchable, and it is new and adds something to new knowledge. Okay. So the question number 9, the study in which the investigators attempt to trace an effect known as. The study in which the investigators attempt to trace an effect is known as. So which is known as ex post facto research. That the study in which study that investigator attempt to trace an effect. So that is why which is known as a ex post facto research. So the option D is correct. Now question number 10, generalized conclusion on the basis of sample is technically known as. generalized जो conclusion है on the basis of sample technically known as, तो उसे क्या कहते हैं. So the data that generalized conclusion on the basis of sample is technically known as. Here option number D is correct, data analysis and interpretation, parameter inferences, and the statistical inference. Then the answer is option number A correct here, data analysis and interpretation. मतलब जो generalized conclusion है on the basis of sample, which is known as data analysis and interpretation. Now the question number 11, fundamental research reflects the ability to.
फंडामेंटल रिसर्च कौन सा एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज हियर ऑप्शन नंबर बी, एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स. क्वेश्चन नंबर 12, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज. साइंटिफिक रिसर्च का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑप्शन में दिए हैं एम्पेरिकल, it is correct, theoretical, it is also correct, and experimental, those all are comes in scientific research, all the above, but it's not empirical is not liable for the humanities research or historical research. So these are the all correct. Option number D is correct here. Now question number 13, authenticity of a research finding is its. research की authenticity, okay, authenticity of a research finding is its. So the here correct option is objectivity. Now the question number 14, which technique is generally followed when the population is finite? जब population finite होती है तो कौन सा टेक्निक जनरली यूज़ होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ होता है. व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट देन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक. नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, research problem is selected from the standpoint of. Research problem is selected from the standpoint of. So the research problem is selected on the standpoint of social relevance. Now the question number 16, the research is always. So the here research is always verifying the old knowledge, it is correct. Exploring new knowledge, it is also correct. Filling the gap between the knowledge, it is also right. So the option number D is correct, all of these. Now question number 17, research is, what is a research? So research is working in a scientific way to search for the truth of any problem. So it is a definition of research. Research is working in a scientific way to search for the truth of any problem. So question number 20 now, that is a common test in research demands much priority on. A common test जो research demand की priority है. So which is this? So the reliability is correct, usability is also correct, and objectivity is also correct. So the option number D is हमारा यहाँ पे correct हो जाता है, option number D. उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस. रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट करने में हमारा पहला स्टेप क्या है? तो हमारा पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. नाउ द क्वेश्चन नंबर 22, विच करेलेशन कोफिशिएंट बेस्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस. कौन सा करेलेशन ऑफ कोफिशिएंट बेस्टली एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस. So the here option number A is correct, 1.00. Then manipulation is always a part of. Manipulation is always part of experimental research. तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. The explanation is included in this now. Experimental research, that researchers deliberately manipulate one or more independent variables to observe their effect and depend variables to goal is establish cause and effect. That is why relationship and test hypothesis. So this type of a research offers involve control groups. Okay. And then the question number 24, the research which is exploring new facts through the study of the past is called. एक ऐसा रिसर्च जो एक्सप्लोर कर रहा है नए फैक्ट्स को थ्रू द पास्ट यूजिंग द स्टडी ऑफ पास्ट, तो उसे क्या कहते हैं? तो रिसर्च जो नए फैक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहा है और नए फैक्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए हेल्प ले रहा है पास्ट स्टडी की, तो उसे कहा जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च. नाउ क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ अ नल हाइपोथेसिस. सो द नल हाइपोथेसिस वेयर व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स. व्हाट इज़ अ नल हाइपोथेसिस? जब वेरिएबल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, व्हेन देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स देन अ नल हाइपोथेसिस. सो द ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 26, वी यूज़ फैक्टोरियल एनालिसिस. सो हम फैक्टोरियल एनालिसिस यूज़ करते हैं टू नो द डिफरेंस अमंग द मेनी वेरिएबल्स. हमें बहुत सारे वेरिएबल्स में डिफरेंस पता करना है तो हम यूज़ करते हैं फैक्टोरियल एनालिसिस. सो द डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. The same question also have a factorial analysis, specifically factorial analysis of variance, that is ANOVA, ANOVA is used to investigate the effect of two or more independent variable on the dependent variable. So it helps to determine whether there are significant differences or the interactions among the independent variables.
Now the question number 27. Which of the following is classified in the category of the developmental research? Which of the following is classified in the category of developmental research? So the here all the above. यहाँ पे in the category of development research, that is philosophical, action and descriptive. Question number 28. Action research is. So the action research is applied research, a research carried out to solve the immediate problem, and longitudinal research. तो action research में एक applied research भी है, वो research carried out to solve immediate problem also, and a longitudinal research also. So the all here option. So but हमारा correct option यहाँ पे है option number B, research carried out to solve immediate problem. Because the action research is an approach to research that encompasses all the option mentioned, and it is applied research method where the researchers work collaboratively with practitioner or to find out something. So all the option A, an applied research, B, a research carried out, and now question number 29. The basis on which assumptions are formulated. assumption किस basis पे formulated होते हैं? तो assumption formulated होते हैं cultural background of the country, universities or specific characteristics of the caste. So all these are correct. When assumptions are formulated, they are basis on the cultural background, universities, specific characteristics of the caste and all. But यहाँ पे हमारा correct option है cultural background of the country. Now the question number 30. How can the objectivity of the research be enhanced? Research की objectivity किस तरह से enhance हो सकती है? तो हमारा correct option है option number all of these, through the impartiality, through the reliability and through the validity. Question number 31. A research problem is not feasible only when. So the correct option is option number C. It consists of independent and dependent variables. Pause the video and try to read the explanation and understand it. Now, question number 32. The process not needed in experimental research is. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन सी प्रोसेस इज नॉट नीडेड या ज़रूरी नहीं है? तो हमारा सही ऑप्शन है रेफरेंस कलेक्शन, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, मैनिपुलेशन ज़रूरी है, कंट्रोलिंग ज़रूरी है. डी इज़ करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 33 हियर. When a research problem is related to heterogeneous population, the most suitable sampling method is. Heterogeneous different things. So here हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी, बिकॉज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. व्हेन रिसर्च प्रॉब्लम जो है हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन, अलग अलग पॉपुलेशन से रिलेटेड है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. एक्सप्लेनेशन ऑल्सो गिवन फॉर द सेम क्वेश्चन. व्हेन रिसर्च प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स अ हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन, जब हम रिसर्च में हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन को ऐड करते हैं तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज़ द मोस्ट सुटेबल सैम्पलिंग बन जाता है, क्योंकि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग ही एक मोस्ट सुटेबल मेथड माना जाता है. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग, क्योंकि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं इन सब ग्रुप्स में, स्ट्राटा बेस्ड ऑन द सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स पे उन्हें हम वेरिएबल करते हैं. ईच स्ट्रैक्टम्स रिप्रेजेंट अ रिलेटिवली that homogeneous subset of the population, and that is why it is suitable. And then a random sample is taken for each stratum, and उसके बाद हम एक proportion निकालते हैं, its size or importance in the population. Now question number 34. Generalized conclusions on the basis of a sample is technically known as. देखो, generalized conclusion on the basis of sample is technically known as. The correct option is C, statistical inference. Then the question number here is a explanation दिया है इसका. What is inference? It involves using sample data to make inferences or predictions, and the statistical use or the help to research to draw a conclusion of it. Now question number 36. Which one is called non-probability sampling? Non-probability sampling किसे कहते हैं या क्या है? इसमें दिया गया ऑप्शन क्लस्टर सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कोटा सैम्पलिंग. कोटा सैम्पलिंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. नाउ द क्वेश्चन नंबर 37. फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन. सो द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन. करेक्ट ऑप्शन इज हिस्टोरिकल स्टडीज. नाउ द क्वेश्चन नंबर 38.
field work based research is classified as? So the field work based research is classified as empirical research because there is the empirical things or experiment kind things do. It is a practical. Now in this video we discuss only the 40 PYQs which are very very important for the research methodology if you are studying or preparation for SET, NET, and now there are number of notifications of PET exams. So if you are preparing for then the research methodology, it is there is a compulsory as well as in first paper most important topic nowadays. So which because if there are some questions in the entrance exam of PhD entrance exam, but if you are facing the इंटरव्यू दैट टाइम यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिसर्च मेथोडोलॉजी पे पूछे जा सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज एप्रोप्रिएट टू स्टडी द प्रीवैलेंस ऑफ एड्स अमंग्स द मेल एंड फीमेल इन इंडिया. देखो कौन सा सैम्पलिंग मेथड एप्रोप्रिएट हो सकता है क्या स्टडी करने के लिए? प्रीवैलेंस ऑफ एड्स अमंग द मेल एंड फीमेल इन इंडिया, और ईयर दिए हमें 1976, 1986, 1996 एंड 2006. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्योंकि हम सिस्टमेटिकली डाटा को एनालाइज करेंगे, सब डिवाइड करेंगे, सब ग्रुप करेंगे और फिर रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करके तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के साथ हम उसे टैकल करेंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ द क्वेश्चन नंबर लास्ट 40, द रिसर्च दैट अप्लाइज द लॉ दैट टाइम ऑफ फील्ड स्टडी टू ड्रॉ मोर एंड मोर clear ideas about the problem is. So the A is correct, applied research. This is how we have completed the 40 questions on research methodology. If you like my video then share, subscribe as well as press the bell icon also for the next notification.